पीपल हु आर लुकिंग इन फॉर फ्रेंचाइजी, मतलब एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या मे बी उनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, कुछ नया करना चाहते हैं। बिफोर आई गेट इनटू द डिटेल्स कि मेरे प्रोडक्ट लाइन, जो हमारा प्रोडक्ट लाइन है या हमारा बिजनेस लाइन के पहले मैं थोड़ा और अच्छी तरह से समझना चाहता हूँ बाई मेजर थिंग कि क्यों आज के डेट पे फ्रेंचाइजी एक बहुत बड़ा बूम है और क्यों किसी को भी फ्रेंचाइजी देना चाहिए। सबसे पहली चीज ये है कि फ्रेंचाइजी होता है क्या और कोई भी फ्रेंचाइजी क्यों लेता है। सबसे पहली चीज ये है कि फ्रेंचाइजी बेसिकली आप एक और एक ब्रांड को आप एक बिजनेस सेटअप करते हो और ना अदर पर्सन्स ब्रांड नेम। और इसके काफी रीजंस होते हैं, जैसे कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो सकता है आपके पास टेक्निकल नॉलेज ना हो, ऑपरेशनल नॉलेज ना हो, प्रोडक्ट नॉलेज ना हो, तो यू गेट अ ग्रेट सपोर्टिंग हैंड फ्रॉम द कंपनीज एंड सो दैट द बिजनेस रन सक्सेसफुली। अब क्यों फ्रेंचाइजी लेना चाहिए, ऑब्वियसली आप खुद भी कर सकते हो। तो देखो, हर एक कंपनी का हर एक प्रोडक्ट का एक स्पेशलिटी होता है, जैसे कि आई मीन टू सिल्वर ज्वेलरी, तो जो हमारा प्रोडक्ट सोर्सिंग होता है वो वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस होते हैं। या अगर कोई F&B ले लो तो जो आपका ऑपरेशंस है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो हर एक इंडस्ट्री का एक एक चैलेंज होता है, एंड बाय टेकिंग अ फ्रेंचाइजी यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू कम आउट ऑफ दैट चैलेंजेस। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, काफी लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि अब कोविड का टाइम है एंड शुड वी रियली वेंचर इनटू अ रिटेल बिजनेस or any business for the matter. To be very honest, COVID has actually turned things around, no doubt about it, in all the segments. Yes, businesses, हर कोई business affect हुआ है, but yes, here again there are two aspects of the same coin. Because of COVID, we are getting good retail property at a good price. पहली चीज, थोड़े businesses हैं which you have actually turned the way of doing the business. जैसे कि अभी हमें ये पता है कि कोविड है तो काफी कस्टमर्स कम डोर स्टेप पे आते हैं, या तो बेसिकली हमारा जो भी नया मॉडल है या जैसे हम लोग काम करते हैं, हमारा ऑनलाइन में भी कंसंट्रेशन होने लगा है। सो वी आर टू स्टार्ट अडॉप्टिंग द टेक इन स्टार्ट अडॉप्टिंग द एनवायरनमेंट, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो अगेन कमिंग बैक, सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फ्रेंचाइजी और आज के डेट में फ्रेंचाइजी भी काफी लोग वेंचर इसलिए कर रहे हैं, काफी लोग हैं जो पैरेलल इनकम देख रहे हैं, या दे ऑलरेडी हैव अ ग्रेट, आई मीन दे हैव एन एस्टैब्लिश्ड जॉब इन अ रेप्यूटेड कंपनी। तो उनको एक पैरेलल स्टेबल इनकम सोर्स चाहिए बाय डूइंग अ बिजनेस, सो दैट इज व्हाई पीपल आर गेटिंग इनटू फ्रेंचाइजी। Now, coming to the most important thing, that is, what are the major parameters which is required for coming up with a franchisee? मतलब आप कोई भी फ्रेंचाइजी अगर सेलेक्ट करते हो तो क्या ये फ्रेंचाइजी मेरे लिए सही है, क्या ये फ्रेंचाइजी इज समथिंग which is made for me, tailored for me, and can I grow in this franchisee? तो काफी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि स्कोप हो गया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन का, कंपनी का सपोर्ट हो गया, ऐसे काफी पैरामीटर्स होते हैं। सो आई विल बी डाइविंग यू थ्रू द मेजर पैरामीटर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कोई भी इंडस्ट्री में आप फ्रेंचाइजी लेना या बिजनेस करना, इज स्कोप। स्कोप का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट आपका है आगे जाके उसका फ्यूचर कैसे होने वाला है, उसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं आगे, और उसका फ्यूचरिस्टिक, इज इट समथिंग लाइक, इज इट लाइक टेम्पररी, जैसे कि बीच में वैफल्स का ट्रेंड आया था, अभी ट्रेंड खत्म हो गया, जैसे कि आई एम श्योर यू गाइस वुड हैव हर्ड अबाउट वैफल्स। तो बीच में एक हाइप था, बाद में एक हाइप था बर्गर का, एक हाइप था मोमोज का, जो इट्स अ टेम्पररी हाइप फॉर अबाउट अ ईयर और टू एंड देन द ट्रेंड चेंजेस। So is it like a temporary scope or a longer term scope? That plays a very important role when you decide a right product line to get into. So when we talk about silver jewelry, सबसे पहली चीज ये है कि हम जो सिल्वर ज्वेलरी इज नॉट समथिंग विच इज नाउ, इट इज बीन फ्रॉम एजेस एंड एजेस एंड एजेस। और नाउ वी आर एबल टू जनरेट डिजाइन्स एंड मेक डिजाइन्स ऑफ अ मच बेटर फिनिश, मच बेटर आउटपुट, much better quality, and much better designs. So first of all, silver jewelry with much better design, much better product, much better finishing अभी मिल रहा है। एंड इसका जो स्कोप है, हाउ इज इट, बिकॉज प्रैक्टिकली टू अंडरस्टैंड द स्कोप यू हैव टू गो बैक कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर। आज के डेट पे हमारा जो मेजर सेगमेंट है कस्टमर्स का, दैट इज द
group basically, where that is Gen Y. जो दे आर समबडी जो 4-5 बार कोई भी प्रोडक्ट पहनने के बाद वो बोर हो जाते हैं, दे वांट टू चेंज रेगुलरली. दैट्स द काइंड ऑफ टारगेट ऑडियंस व्हाट वी केटर. तो ऑब्वियसली अगर हम उस टारगेट ऑडियंस को केटर कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर एक्सेसरी मार्केट ले और अगर वो बार बार चेंज करते हैं, तो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल? एक तो है गोल्ड, एक तो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी, और एक है सिल्वर ज्वेलरी विच इज इजिली अवेलेबल. नाउ गोल्ड ज्वेलरी इज समथिंग विच इज वेरी एक्सपेंसिव टुडे, कि आप बार बार जब चेंज कर आप जब बार बार चेंज करोगे, इट टर्न्स अप, आई मीन इट गिव्स अ बिग होल ऑन योर पॉकेट. इट्स अ वेरी बिग कॉस्टली अफेयर. और अगर मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात करूँ, तो लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग एलर्जिक टू, और जो फिनिश होता है इट इज नॉट दैट नीट एंड ग्रेट. तो दैट इज व्हाई द होल ट्रेंड इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स सिल्वर ज्वेलरी टुडे. सेकेंड वन, whether it's just me telling you the trend, today आप कोई भी इंटरनेशनल मैगजीन ले लो या कोई भी सेलिब्रिटी के फोटोज देख लो, एवरीबडी आर ऑन द सिल्वर ज्वेलरी नाउ. मेजॉरिटी ऑफ देम ऑन द व्हाइट मेटल. Let it be white gold, silver, platinum, but it's all in the white jewelry. Yellow is slowly fading off and it is morely like your investment options. But अगर आप फैशन ऑन वेरिएबल का अगर हम देखते हैं, तो सिल्वर इज इन द मार्केट टुडे. दूसरा एक और एक चीज है विच इज मेकिंग सिल्वर ज्वेलरी एज अ ग्रेट ट्रेंड टुडे इज गिफ्टिंग बेसिकली. अब आज की डेट पे लोगों के एक प्राइस ब्रैकेट होता है अराउंड 500 to 1500 एट एन एवरेज फॉर एन एवरेज गिफ्टिंग. अगर आप खुद भी अगर सोचो, तो व्हाट विल यू बी एक्चुअली गिविंग इट एज अ गिफ्ट? एक मे बी अ शो पीस, मे बी अ बुके विच माइट गेट स्पॉइल्ड इन अ डे, या आप एक शो पीस दोगे जो उनके घर पे पड़ा रहेगा, वो ऑब्वियसली they like and gift it to somebody else, because that is what happens in everybody's house. Yeah, now that I told you, the trend is shifted towards silver jewelry because people want to give something where people will preserve, people will wear and remember. That is why silver jewelry is also being treated as a great gifting options. तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी ह्यूज मार्केट, जो ज्वेलरी मार्केट है, एज वेल एज अ सिल्वर, एज अ गिफ्टिंग मार्केट एज अ होल. तो बहुत बड़ा मार्केट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. एंड अगेन, वेदर इट्स हिंदुइज्म, मुस्लिम और क्रिस्टियनिटी, सिल्वर ज्वेलरी इज ऑलवेज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस मेटल. तो उस हिसाब से काफी एक्सेप्टेबिलिटी है मार्केट में in terms of gifting also. So that's the kind of scope what we are talking about. Now, this is about the story. What is Flaunt Basket all about? Basically, Flaunt Basket as a brand, which is a designer silver jewelry brand. Initially, we started as a B2B brand where we're supplying to all the major corporates, which includes Malabar, CKC, Joss Joy, and majority players. For 2017, we started our retail and an e-com line, for which because for us it was very important that before we had a plan where we want to get into franchisee and expand globally. But before we get into it, our product line, our price line, जो भी हमारा product mix है, price mix है, it has to be acceptable from the market. तो that is when we had our first concept testing store, जो GT Mall में था. GT Mall again is a very price sensitive place. People, अगर यहाँ पे कोई है बैंगलोर से, तो I'm sure they'll be able to get to know this, that GT World Mall is a very sensitive mall where the majority of the age group of the people over there are in the the salary bracket is between 20 to 30,000 सैलरी का ब्रैकेट है उधर के जो लोगों का ज्यादातर. द पीपल हु नॉर्मली शॉप देयर आर पीपल हु आर देयर. तो द रीजन व्हाई वी हैड सेड दैट इज, if it is an economical mid the middle class level kind of crowd, is it easily accepted from the crowd to buy our product line? That was a great tester. And after that, once the tester all went fine, then we started our whole franchise implementation and started things accordingly. So basically that's the flow. And after that we started, I mean, as I also told you, COVID, but by God's grace, COVID has been very good for us. We are getting good properties at a good place, and yes, we are growing. The November we had our Jayanagar store opening. That's the last November. And I mean, last 15 days back we had a store in Vizag which is opened. And if people are aware of Bangalore, we have a mall. There's a mall by name Mantri Square. It's one of the top second mall in Bangalore. So there we are opening it on May 14th. So I mean, things are going great. And in fact, even we are opening one in Odisha that's going to be in May end or June first week approximately. And Mantri Arena, which is coming up, that's also one more mall of Mantri, which is under construction. So I think it's about 5 months more it would take for them to launch.
So apart from the earlier, we have more 2 3 stores which are not specified over here. Basically, we have a store in Bell Road, we have a store in BTM, and 2 3 stores which is not specified here. Coming back, what is unique about Flaunt Basket? And it's just a silver jewelry, right? I mean, according to you, at the जब आप सोचते हो कि क्या है सिल्वर ज्वेलरी है, तो हम आपका फ्रेंचाइजी क्यों लें? हम मार्केट से खरीद के हम खुद बेच सकते हैं या थिंग्स लाइक दैट. तो सी फर्स्ट ऑफ ऑल इफ हमारा प्रोडक्ट लाइन अगर सेम होता कि आप मार्केट से खरीद के आप अगर बेच सकते हो, तो ऑब्वियसली मेरी कोई फ्रेंचाइजी कोई लेती नहीं, कोई लेता नहीं, एंड आई वुड नॉट थिंक ऑफ गेटिंग इनटू द फ्रेंचाइजी नेटवर्क. So what makes us different is सबसे first and foremost important thing is we have a great price analytics and better sourcing. Now we basically we have sourcing across the globe, which includes Italy, China, Bangkok, Turkey, and a lot of countries whom we work with, where we source our product lines from there. Our design is in the mixed ratio of 60-40, where 60% of the kind of stock is what we procure from their designs of the factory, and 40% we have our in-house designers who actually designs, and we give it to the respective factory, whoever is good at it. Because see, every factory has its own specialization. For example, अब मान के चलो कि there's one particular factory. I think this is a classic example which I give in almost all the places, because this is something where my risk factor is very less, by giving out the secrets of the factories. So there's one factory by name Seven Goods in China, and they are very good in this tritone jewelry. तो दे आर लाइक स्पेशलाइज्ड इन दैट, एंड मेरा जितना भी ट्राइटोन ज्वेलरी बनता है उस कैटेगरी का, वो उनके पास ही बनता है. नो देयर माइट बी क्वेश्चन राइजिंग कि हाँ अब चाइना में भी ऑब्जेक्शन स्टार्ट हो गए हैं, इंपोर्ट बंद हो जाएगा एंड थिंग्स लाइक दैट. तो यस, इफ ऐसे ऐसे कोई सिचुएशंस आता है तो वी आर नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन देम एनीवेज, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू वी हैव सोर्सिंग अक्रॉस द ग्लोब. तो हमारा वहां पे भी बनता है, दूसरी जगह पे भी बनता है. हाँ, हो सकता है कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी के डिजाइन नहीं बनेंगे. That's about it. So there's nothing that we're dependent on a country, or we're depending on a design, and we have Indian manufacturing also. So, but yes, there are some factories who has their own specialty. The biggest advantage of taking our franchisee would be there's no inventory risk. So basically, all the inventory risk is ours. So whenever the product comes in, as let's say after 1 month or 1.5 months, you feel 5-10% of the product is such that it is not selling, you send it back to us and gets refreshed with new design every time. So that's how we maintain our inventory model in such a way so that there's no inventory risk on your head, and you keep on rotating. I mean, the new stock keeps on coming in and the old stock keeps on going. Basically, we are working on a virtual stylist model, as well as we are also working on a omni-channel sales. When I'm saying you omni-channel sales means आपका कोई restriction नहीं है कि आपको store पे ही बेचना है. You can come up with your own Instagram and Facebook pages like Flaunt Basket underscore the area जो भी आप area ले रहे हो. तो based on that, you can create up pages and we will give you all the training what's required. कि Facebook में कैसे बेचा जाता है, Instagram में कैसे बेचा जाता है, how to increase your sales on that, how to channelize your partners and customers coming into the online platform. Fifth most important point is हमारा जो फिलहाल मॉडल है वो काफ़ी सक्सेसफुल है in terms of the financial process. Obviously कि अगर मैं हमारे फ्रेंचाइजी का बोलूँ, from the second month onward they normally break even, मतलब उनका जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकल जाता है. And one classic example is my existing franchisee who had taken long back, almost about 1.5 year back, जब हमारा मॉडल बहुत छोटा था. In terms of we had a now our model is 35 lakhs though, but stock investment is of 35 lakhs. जब उस टाइम पे सिर्फ 15 lakhs था, तो she had taken in, and now she also wants to go for a bigger store and she wants to go for a bigger place. So what better would be a social proof or financial proof to prove that how good the model and how good the products are. And the biggest most important thing is we have a great option to tweak. अब कोई भी बिजनेस अगर नहीं चलता है तो 4 रीजन हो सकता है. एक हो सकता है लोकेशन सही नहीं है, दूसरा हो सकता है प्रोडक्ट सही नहीं है, तीसरा हो सकता है सेल्स टीम सही नहीं है, या चौथा हो सकता है कि आफ्टर सेल सर्विस अच्छा नहीं है. So on all these 4 parameters, when we go for the first one, let's say location सही नहीं है, तो अगर location सही नहीं है तो obviously that is why we take a very good care for seeing to it कि it's a great location when we have to go for it. Second, when it comes to product, as we are into a fashion industry, we ourselves come up with new designs, new variety on a regular interval.
तो मान के चलो इफ द प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट आपको दिया गया है आपके प्रोडक्ट लाइन में जो वहाँ पे डिमांड नहीं है, तो आप उसके रिटर्न भेजिए और आपको नया डिजाइन मिलता रहेगा ऑन अ डिफरेंट एक्सट्रीम, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि आपके वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है। तो दैट्स बिकॉज वी आर इनटू द फैशन इंडस्ट्री और चेंजिंग इज एवरीथिंग। ऐसे तो है नहीं कि हमारी एक बर्गर ब्रांड है, हम सिर्फ बर्गर ही बेच रहे हैं। तो वी आर ओपन फॉर दिस सो कॉल्ड चेंजेस एंड वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड वी ourselves change on regular intervals. The kind of product margin what you have is around 30 to 50, 35 to 50%. At an average about 40% करीबन बैठता है, because there are some product lines जिसमें 20% भी margin है, there are some product lines जिसमें 60 भी at an average बैठता है. तो at an average when you set at the end of the month to calculate, your margins normally would be in the ratio of 35 to 50% के बीच में कहीं रहता है normally. That's the margin, and the product line we start from as low as 200 rupees. The simpler and the smaller starts from 200 rupees and then it goes up. At an average 250-300 में आपको काफी decent collection दिखने मिल जाता है, and then it goes up to about even 20-30,000 rupees depending on the design and the variety. We are one among the only companies who give authentication card with every product, so that the customer normally feels whatever they're buying is genuine. And we also have a buyback policy where if whoever is buying from us, we buy back off on that day's silver rate into 92% is what we buy back. So at least the customer is also sure and confident that whatever they're buying is pure silver. Now, these are some of the brandings what we have been taking. These are some of the celebrity talks. These are few celebrities from the sandalwood and the other South industries. So we have about 25 to 26 celebrities who've been endorsing us, promoting us, influencing us on these social platforms. This is some of the events which we participated, and these are some of the outdoor brandings which our company has undertaken. This we had an influencers meet where we had few influencers, about 10 to 12 influencers were there who normally have about 1 lakh plus followers closely. So we had influencers meet where we had actually asked all the influencers to come to the store and share in their experiences, click photos and all that. So we had a great mileage by doing this particular activity. This is how our product looks, and when I tell you we are very different from others, this is just a rough idea of a collage. I'm sure when you go to our Instagram page, तो आपको और डिटेल में और बेटर तरीके से आपको दिखेगा like the kind of products and details what we have, जैसे कि कड़ा हो गया, the kind of finish what we have and the product line. We also do product customization. So when I'm saying product customization, this is order of one of the celebrities' mother actually ordered this. So she wanted something very exclusive. So we had a designer who had designed it, and then we had manufactured for her. These are few of the testimonials. Well, because for us, it is your testimonials and it is your happy customers which makes your brand as a brand. So these are few of the details of the customers, happy customers. These are few of the Instagram again testimonials where we also had clients from Iran and other parts. If you see the left part of the conversation, you can see it is being chatted, and I mean it's an Iran-based client. So my team does a great work, because they use translators and start interacting with the Irani people in the Iranese language. So my I have a pretty decent team who does on that part. This is how the store looks. Uh, this is how a franchisee store looks like. Uh, this is the smaller format, and this is just a 400 square feet. Now the further ones and all, we are going for 500 plus square feet. The Geneva store, what we have is again 500, 600. Vishakhapatnam is also a bigger one. Now coming up to the financials, basically the financials would remain the same for FOFO and FOCO. We need a minimum space of about 500 square feet, where 5 lakh is the franchisee fees. Interiors is 10 lakhs. Now interiors is it's just an approximate amount given to you. That would be an approximate cost. Here again, आप कोई कंपलसरी नहीं है कि आप मेरा कोई इंटीरियर वेंडर से कराओ या कुछ भी. We have a tie with interior vendors, but if you have your own interior vendor, you can get it done from them, but as per the company guidelines. And there is a security deposit of 35 lakhs, against which you will be getting a stock worth rupees 55 lakhs. Now this 35 lakhs, whatever the security deposit is, 100% refundable. So after 5 years of the contract, if you're not happy working with us, you give back the stock and your 35 lakhs gets refunded back to you. So logically speaking, 5 lakh is the only amount you're paying to the company.
your actual investment in the whole, the risk appetite investment is going to be 15 lakhs, and 35 lakhs is anyways refundable. And why is this 35 lakhs? Why not lesser? Is because 35 lakhs is what we found is the bare minimum which is required to fill in your store as with stock. To be very honest, if I'm talking about the Jayanagar store, now they've increased the stock investment to even 55 lakhs, 55, 60 lakhs now. But see, what happens is when you see business, you will automatically go on increasing the stock. More the stock, more the business you'll have, and more the customer flow you'll have by default. But 35 lakhs is the minimum threshold, which is a required, a must in order to have a good business. Now, as I have told you, FOFO and FOCO, the investment remains same. The difference between FOFO FOCO is in FOCO, the company would manage, the investor would be investing all the commercials involved, and whatever the net profit happens, it will be in the ratio of 60/40. So that these is a small Excel calculations. Uh, I mean, small calculations that is the kind of sales what you can expect in month one, month two, month three, month four, and the kind of basically the total sales, store sales, online product cost, gross profit, rentals, electricity, all the expenses included, and close to you could look in for about somewhere about 26 lakh 82,870 as your net profit in the first year approximately. And the same thing if I'm going in for about a 5-year horizon, at an average I've taken three parameters where one is an average, one is a base performance, one is a great performance, and you guys can actually see the kind of margins which could be made on this particular platform. Thank you, and I'm open for the questions. Ashokji? Does anybody has any questions out here? Basically, I mean, I'm sure you guys could actually go through a lot of articles online where silver jewelry has a great, huge scope. Uh, Thank yes, Ashokji, please go ahead.